Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus. नाजरीन, आज की इस एपिसोड में हम जो COP30 मीटिंग हुई है इन ब्राज़ीलियन सिटी ऑफ बेलम उसके ऊपर बात करेंगे। और हम आज की इस एपिसोड में बुनियादी तौर पर थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे कॉप का और बुनियादी तौर पर फोकस करेंगे ऑन द की अचीवमेंट्स ऑफ दिस समिट, दिस मीटिंग ऑफ कॉप इन ब्राज़ील। और उसके साथ हम देखेंगे इस जो कॉप मीटिंग है इसके अंदर फेलियर्स भी हैं और वो क्या हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि जो मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल मीडिया है उसके अंदर फेलियर्स आर हाईलाइटेड देयर, which is partly true, but at the same time we can't underestimate the achievements that have been there in the COP30 meetings in Belem, Brazil. तो नाज़रीन, सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करूं तो ये जो समिट हुआ है ब्राज़ील के अंदर COP30, इस समिट जो है इसके अंदर ये तकरीबन 11 दिन ये इवेंट रहा। नवंबर 10 से ये स्टार्ट हुआ मंडे को और इट एंडेड ऑन 21 ऑफ नवंबर। नाज़रीन, इसके अंदर तकरीबन 200 से ज़्यादा जो मुल्क हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी। आल्दो जो टॉप लेवल जो पार्टिसिपेशन थी वो इसमें नहीं थी। मेजर जो कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना, जैसे इंडिया, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और मोस्टली यूरोपियन स्टेट्स, they decided to be not part of the summit personally, but delegates from across the world has taken participated in it। और उसमें हमने देखा कि जो 90,000 से ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने डिफरेंट सेशंस के अंदर पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो NGOs हों, चाहे वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हों, कंपनीज हों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हों, IGOs हों, या स्टेट्स की जो डेलीगेशंस हैं। सो थाउजेंड्स ऑफ देम गैदर्ड इन द बैलम, which is considered to be the gate into the famous Amazon forest। तो एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस थी इसकी, बिकॉज नाज़रीन ये जो कॉप सीरीज है, दिस कॉप इज पार्ट ऑफ ब्रॉडली द एग्रीमेंट दैट इज जनरली कॉल्ड द रियो एग्रीमेंट इन 1992, जिसको दूसरा नाम यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। So because the process started in Brazil and it came home to Brazil in 2025 for the 30th Conference of Parties meeting। अब नाज़रीन, इस पॉइंट के बारे में बात करूं तो इस कॉप के बाद जो अगली कॉप है दैट विल बी COP31, दैट विल बी हेल्ड इन टर्की। बट ऑब्वियसली बात है, देयर वर काइंड ऑफ differences with Australia. There was a tussle between Australia and Turkey to hold the next COP meeting. So it was decided that the president will be Australia. COP की जो प्रेसिडेंसी है वो ऑस्ट्रेलिया के पास होगी। Besides that, जो प्री समिट मीटिंग्स हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया में होंगी, लेकिन जो मेन समिट है दैट विल बी हेल्ड नेक्स्ट ईयर इन टर्की। टर्की के अंदर जो है ये नेक्स्ट समिट होगा। अब नाज़रीन, इस पॉइंट के ऊपर आते हैं कि इस समिट की मेजर अचीवमेंट्स क्या हैं, व्हाट हैव बीन मेजरली अचीव्ड इन दिस समिट। Obviously, there are multiple achievements. उनमें से मैं कुछ highlight करूंगा। Some of those achievements include the Climate Adaptation Fund, which is considered to be tripled by between 2030 to 2035। 2030 से लेकर 2035 तक जो क्लाइमेट एडाप्टेशन फंड है उसकी अमाउंट ट्रिपल की जाएगी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। और नाज़रीन, यहाँ पे ये बताना जरूरी है दैट क्लाइमेट एडाप्टेशन इज पार्ट ऑफ द प्रीवियसली साइन एग्रीमेंट, जिसको हम क्लाइमेट फाइनेंस कहते हैं। So climate finance, which was to the tune of 300 billion US dollars, उसमें से जो almost 120 billion US dollars होंगे, they would be spent on climate adaptation by the states। So in that way, the major chunk of the money would not go to anything else but to the adaptation, so that states, we know that climate is a reality, we know that we will be able to overcome this challenge after centuries or decades। और इसलिए in the meanwhile the societies will continue to be faced with these challenges, and how those communities and societies can adapt to the harsh changes brought by the climate change, उसके हवाले से जो है वो एक कम्युनिटी रेजिलियंस जो है वो क्रिएट की जाएगी। और उस हवाले से जो एडेप्टेशन प्लान्स हैं उसके ऊपर ऑलमोस्ट 120 बिलियन US dollars आउट ऑफ द टोटल 300 बिलियन डॉलर्स कमिटेड बाय 2025 वो जो है वो खर्च किए जाएंगे। दिस इज समथिंग दैट हैज बीन सिग्निफिकेंट बिकॉज दैट इज लाइकली टू प्रोटेक्ट the states from the existing challenges from climate change, besides going for a solution to the problem। Another achievement is that by the end of this COP30, 119 states of the world have updated their nationally determined contributions, commonly known as the NDCs, जिनमें जो states हैं, they develop and design their plan on how they would tackle with the climate change, and they will they kind of update
the COP meetings about the contributions that they would make at national level on reduction of the greenhouse gases, on broadly helping in tackling the climate change issues. तो जो NDCs हैं उसके जो स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने अपडेट किए हैं वो तादाद 119 तक पहुंच चुकी है। और आज ये बताना भी जरूरी है कि ये 119 स्टेट्स हैं, combinedly they contribute 79% of the global emissions. So in other words, the 79% global emissions हैं वो करने वाले जो मुल्क हैं, they have updated themselves, they made commitments about the NDCs at their national level. Besides that, Nazeen, this forum not only provided a collaboration between the states but also between the cities. At COP30, it was decided by around 14,000 cities, states, and regions. They committed to the climate solutions under the local leadership forum, and obviously 185 cities joined another initiative, which is Beat the Heat initiative, which is meant to tackle the extreme urban heat and जो एक that ultimately results in a lot of other disasters and other kind of calamities. Another important achievement is the launch of world's most important step towards the forest and nature based protection and the finance. नाज़रीन, इस हवाले से जो लॉन्च किया गया, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, which is called the Tropical Forest Forever Facility, which is a global investment for the tropical forest conservation and sustainable bioeconomy. Although this initiative was primarily for Brazil, but other states have largely joined it later on, and this is why it's an important push for going back to the nature and forestation का जो step है उसकी वजह से, because this meeting took place right at the doors of the Amazons. Therefore, this initiative was primarily a Brazilian push, which was ultimately got a global focus and global acceptability. Besides that, another achievement is that one of the world's largest coal producers, that is South Korea, has committed to phase out the coal by 2040. Similarly, जो global जो utilities provide करने वाली companies हैं, they also agreed to net carbon zero, which is by investing around 150 billion US dollars of investments towards energy transition, चाहे वो ग्रिड के अंदर हो या वो स्टोरेज के अंदर हो या वो प्रोडक्शन के अंदर हो, उस हवाले से 150 बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर दे हैव लार्जली एग्रीड टू इट. सो नाज़रीन, ये जो मेजर अचीवमेंट्स हैं उसके साथ साथ हमने बहुत सारे फेलियर्स भी देखे हैं इस मीटिंग के अंदर, और उनमें जो अगर मैं टॉप फेलियर्स की बात करूं तो जो एक बड़ा फेलियर था, दैट वाज जो बड़ा हाईलाइट भी हुआ था, एंड इट वाज अबाउट ग्रेजुअली फेजिंग आउट ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स. नाज़रीन, जब यूएई में क्लाइमेट समिट हुआ था COP28, तो उस वक्त देयर वाज अ नीड एंड देयर वाज कॉल फॉर फेजिंग आउट ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स ताकि एनर्जी जो एमिशंस हैं उसको कम किया जा सके. But at that time it was considered to be phase down rather than phase out के बजाय phase down की बात की गई थी कि gradually transition away करेंगे from energy, but completely bypass करेंगे, ऐसा कोई step नहीं लिया गया. But इस मौके पे जब COP30 था, it was expected that there must be some timeline, and as has been stated by the president of Brazil as well, that there will be some sort of agreement on completely phasing out the fossil fuels in order to tackle this menace of climate change. However, हमने कहा कि despite that implementation was the main agenda of this team, the purpose of the agenda according to the Brazilian officials was not to make commitments but rather to implement it. But phase out के वाले से कोई agreement नहीं हुआ, and even there was no reference to phase down things, and this is considered to be one of the most important, significant, and far-reaching failure of COP30, that it failed, or primarily because of the opposition from the major producers, that is the Gulf region. Besides that, another failure is that जो NDCs जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जिसमें around 119 states जो हैं वो उसमें शामिल हो चुकी हैं, they have updated their जो contributions हैं, उनको अगर उनका contribution देखा जाए तो जो total collective ambition है of all these states and the pledges that they made, it is delivering less than 15% of the emissions reduction that are needed by 2035 to keep the global warming under 1.5 degrees Celsius by the end of this century. So the current commitments are falling short of what is actually needed on the emissions, regarding emissions.
Besides that, although TFF was signed and that initiative was launched in this summit, but at the same time there was no roadmap for given about the deforestation and curbing the deforestation in the global community. So डिस्पाइट द फैक्ट दैट जिस तरीके से हमने देखा कि जो फेज आउट वाली डिबेट थी उसके अंदर भी कोई रोड मैप नहीं दिया गया, फेज डाउन की बात भी नहीं की गई, लेकिन यहाँ डिफॉरेस्टेशन में भी कोई ऐसा रोड मैप नहीं दिया गया, बाइंडिंग रोड मैप नहीं दिया गया कि कब और किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन को खत्म किया जाएगा ताकि जो फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया जाए इन ऑर्डर टू टैकल द क्लाइमेट चेंज डिस्पाइट द अजम्पशन दैट इट वाज लाइकली टू डू सो। बट एक वॉलंटरी किस्म का जो TFF का जो इनिशिएटिव था दैट वाज वॉलंटरी एंड नॉट लीगली बाइंडिंग रोड मैप फॉर डिफॉरेस्टेशन curbs at international levels. Besides that, it is also believed that जो adaptation finance की बात की गई है that is around $120 billion by the 2035 और उसको ट्रिपल करने की बात की है. This seems to be very ambitious, but it seems to be lacking any kind of credibility to this claim. It is generally believed that even if the $120 billion are spent, the magnitude of the climate change what is required is उसके मुकाबले में this $120 billion is like a peanut and it is not likely to make significant contributions. And even within $120 billion, they believe that there is a lack of clarity on the mode, timing, and time span of the money that will be spent over there globally. And considering the political changes that are brought internationally, ये जो $120 billion की amount है, which itself is not sufficient, then this even $120 billion are less likely to be materialized by the time of 2035. So to conclude, नाज़रीन हम कह सकते हैं that ये जो COP30 थी, it was considered to be overall a failure, and most important reason for the failure are multiple, but उनमें सबसे जो important है, in the absence of the United States, in the absence of the United States as a factor that usually bridges gap between global south and north, and particularly between Europeans, the developed states, and the developing states, US was absent there, and therefore Europeans planned a very aggressive kind of approaches, including their opinion that they want to impose a trade tax on the products that use the high fossil fuels, that have a high fossil fuel usage, जैसे एल्यूमिनियम है, जैसे आयरन है, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है वो एक किस्म का एक क्लाइमेट टैक्स जो लगाने का सोच रहे हैं. तो जो यूरोपियन का इनिशिएटिव था दैट सीम्स टू बी वेरी आइडियली वेरी इंपॉर्टेंट वन, बट द कास्ट दैट इट हैड ऑन द डेवलपिंग स्टेट्स दैट वाज अनबियरेबल. देयरफॉर इस दफा यूएस का ना होना और यूरोपियंस का अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना, दैट वाज समथिंग दैट हैड impacted the success of the COP30. And let's hope नाजरीन that COP जो मीटिंग्स हैं, जो नेक्स्ट मीटिंग है जो कि टर्की के अंदर होगी, बिकॉज टर्की इज रीजन जो कि एशिया, यूरोप और टू सम एक्सटेंट अफ्रीका को कनेक्ट करता है. टर्की में ये समिट होना इज लाइकली टू सिंबलाइज द ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड द नीड ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन. But if the current trends continue, the lack of focus on climate change, especially since Trump came to power and since the wars in Ukraine and Middle East have been fought, ये जो distraction है COP30 के ऊपर, this is likely to be something that the world cannot afford. If we want our posterity to live and thrive in a healthy environment, the states need to ultimately come together and find a way out that will be a win-win for everybody. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe to this channel. Allah Hafiz.